हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जामपुर CDS AFCAT एंड CAPF। तो गाइज आप सब कैसे हैं? होप सब आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है वो होगा बेहद जबरदस्त सेशन, क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में मैं आप लोगों को टॉपिक दूंगी, उस टॉपिक को आपको बात करनी है कि उस टॉपिक पे आप लोग क्या बोलोगे। ठीक है, क्लियर है? टॉपिक क्या था? किसी को टॉपिक याद है तो वो मुझे टॉपिक बता दे जरा। मैं टॉपिक भूल गई हूँ, भुलक्कड़ हूँ थोड़ी सी, तो याद नहीं रहते टॉपिक्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा भी ज्ञान दे दो, देन उसके बाद सेशन स्टार्ट करते हैं अपना बढ़िया तरीके से। चलो, जितने भी बच्चे एक बार कनेक्ट कर लीजिए, देन सेशन को स्टार्ट करेंगे। जितने भी बच्चे हमारे YouTube से कनेक्ट हो रहे हैं वो गूगल मीट का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने गूगल मीट का लिंक जो है वो पिन कर दिया है, तो उससे आप हमारे इस सेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। चलो भाई, यहाँ पे भी गूगल मीट पे सारे के सारे बच्चे आ ही चुके हैं। तो बच्चों एक मिनट रुक जाओ, सारे के सारे बच्चे कनेक्ट कर लें, देन उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक क्या था, कुछ याद है आप लोगों को? ये टॉपिक मैं भी बताऊंगी। मैम, चाइल्ड मोर्टालिटी increases in the India. गुड। Child mortality is very high in our country. What, in your view, is contributing to this? Early marriage, poor health care system, age old superstition. ठीक है, ये थे आपके टॉपिक। तो मैं बस आपको चैट बॉक्स में लिख देती हूँ अभी इस टॉपिक को, और जितने भी बच्चे हैं वो गूगल मीट से कनेक्ट कर लेंगे। और अपने आप को भी सारे बच्चे म्यूट कर लो, जितने कोई सारे बच्चे नहीं आ जाते। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जिसको सोचने का टाइम चाहिए वो सोचिए, और फिर आपको क्या करना है, इस पे ग्रुप डिस्कशन करना है। मैम बोले? अभी थोड़ी देर रुक जाओ, बच्चों को आने दो, फिर बोलते हैं। ठीक है? यस मैम। चलो भाई, मेरे ख्याल से बच्चे भी थोड़े से लेट आएंगे, तो आप अपने अपने पॉइंट्स को बोलिए कि आप लोग कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे। अभी तो आ गए, एकदम से आए हैं सारे बच्चे। कोई क्या क्या बोलेगा, पॉइंट आप अपने सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको बोलना है।
तो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। और ये आपका ग्रुप डिस्कशन का पार्ट है, 15 से 20 मिनट आप लोगों को दिए जाएंगे इसमें। और टॉपिक है आपका, वो आपका टॉपिक मैंने चैट बॉक्स में दे रखा है। टॉपिक है आपका लेक्चरेट, इसके बाद होगा लेक्चरेट में मैं आपको सडनली कोई टॉपिक दूंगी, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी इज वेरी हाई इन आवर कंट्री, बट इन योर व्यूज इज कंट्रीब्यूटिंग टू दिस अर्ली मैरिज, पुअर हेल्थ केयर सिस्टम एंड एज ओल्ड सुपरस्टिशन। सबसे पहले आप लोग ये डिसाइड कीजिए आप लोगों को किसके ऊपर बोलना है। वन बाय वन पहले मेरे को ये बताया जाए। मैम अर्ली मैरिज। ओके, पुअर हेल्थ केयर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट। मैम पुअर हेल्थ केयर सिस्टम। ओके, और कौन किस पे बोलेगा? कृष्णा मोहन सिंह तो अभी आया है। रोहित पाल सिंह, अभी बच्चे जोड़ रहे हैं एक एक करके ना। ग्रुप डिस्कशन का पार्ट है। मैं आपको एक बार और मैसेज जो है वो गूगल मीट की चैट बॉक्स में डाल रही हूँ, उसको ध्यान से देखिए। चाइल्ड मोर्टेलिटी इज वेरी हाई इन आवर कंट्री, what in your views is contributing to this? Early marriage, poor healthcare system and age old superstition. बताइए। जैसे भी बोलना है बोलना, और थोड़ा सा कोशिश करना कि अंग्रेजी भी आप यूज कर पाए, अब थोड़ी बहुत, ज्यादा ना यूज कर पाए लेकिन थोड़ी। हाँ मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो। पहले ये बताओ कि आप कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करोगे। मैं आपको बता देती हूँ, चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर बहुत अधिक है, तो उसका रीजन क्या है? मैम आई वुड चूज चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। तो आप सिलेक्ट कौन सा करो, ए बी सी या डी में से? मैम मैं तीनों को इंक्लूड। ना तीनों इंक्लूड नहीं होंगे ग्रुप डिस्कशन में बेटा, आपको एक के साथ जाना पड़ेगा। मैम मैं बोलूं? देन आई वुड चूज बी वन। अच्छा, सो आई वुड चूज बी। ओके, पुअर हेल्थ केयर सिस्टम। ओके, स्टार्ट करो, कोई भी स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो। आपस में आपको कॉन्फ्लिक्ट करना है कि, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात मुझे ये बताओ कि ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या होता है। ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है कि अपने पॉइंट से कन्विंस करना आप सबको, ठीक है। सो स्टार्ट करो। ओके, इन द पास्ट इयर्स we have seen from 1990 to 2019 the child mortality rate has decreased, but still there are regions where you can see child mortality rate increasing. It is due to the poor healthcare system in India as one of the factors. So in India we see 25 lakh children take birth every year, but but 3 lakh children die because of poor healthcare system. And we have seen in recent year the previous year, due to COVID-19 we have seen the flaws in our healthcare systems, and we have seen that due to the poor healthcare system people have died. So if we can't take guarantee of the people, of the adults, how can we take the guarantee of the small children taking birth per minute? Because per minute a child is born in India. So this is my point. Due to poor healthcare system. ये बेटा ये लेक्चरेट नहीं है, सारे बच्चों को मैं समझा रही हूँ, ये लेक्चरेट नहीं है कि एक इंसान बोल रहा है। आपको अपने पॉइंट्स रखने हैं तो पॉइंट्स रखो भाई। जो जो आप लोगों ने डिसाइड किया है, लाइक पुअर हेल्थ केयर सिस्टम डिसाइड किया तो पुअर हेल्थ केयर सिस्टम की साइड जाइए। आपने अर्ली मैरिज डिसाइड किया है तो अर्ली मैरिज की साइड जाइए, लेकिन बोलो। I support this gentleman. I saw in 2019 infant mortality rate is 28.3. But in 2020, its mortality rate increased to 29.07%. And due to only poor healthcare system, many of children died because some of them did not reach the hospital at time, and some of them have lack of oxygen, etc. अर्ली मैरिज वाला कौन था? मैं बोलो, किसका इंतजार कर रहे थे? बोलो।
नो मैम इंतजार किसी का नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर में तो बोल दूंगी। ना ना ना, ऐसे वहां पे बेटा थोड़ी देर नहीं आएगा, वहां पे नहीं आएगा आपका थोड़ी देर, बोलना है आपको। मैम मैम वेट अ सेकंड, एक मिनट। मैम मैम मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, अर्ली चाइल्ड मैरिज। बोलो बोलो। मैम आई वुड लाइक टू कॉन्ट्रडिक्ट द अर्ली मैरिज पॉइंट। लेकिन अभी तो किसी ने कॉन्ट्रडिक्ट किया नहीं ना इस चीज को, अभी तो आदित्य कश्यप ने भी पुअर हेल्थ के ऊपर बोला, एंड गुरविंदर तुमने भी पुअर हेल्थ के ऊपर बोला, तो जब तक कोई इसका नहीं देगा रीजन, आप कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर लोगे? आप अपने हिसाब से तो अनुमान नहीं लगा सकते ना, नेगेटिव पॉइंट नहीं करने हैं वहां पे। सो चलिए कौन बोलेगा अब? मैं हाँ बिल्कुल बोलो। भारतीय युवा ज्वाइन द सेशन। यस मैम। हाँ बोलो। Child mortality rate is very high in our country due to poor health care system. Child mortality or the under 5 mortality rate refers to the probability of a child dying between birth and exactly 5 years of age, expressed per 1000 lives birth. Child mortality rate increases due to poor healthcare system. In 2020, 5.5 million children under 5 years of age died. This translates to 13,800 children under the age of 5 dying every day in 2020. Globally, infectious diseases including pneumonia, diarrhea, and malaria remaining a leading causes of under the 5 death, along with problem birth and intrapattern related complications. India is divided into two types. One is urban area and another is rural area. We have hospitalized that delivery high quality, high care to the urban areas, and on the other end, we have people that could not access basic necessary healthcare systems. The private sector hospitals in India mainly cater to the urban rich, while the rural poor have no option but to visit local healthcare. Even during COVID, these private hospitals provided telemedicine facilities to their customers. Many local healthcare systems do not have necessary as a bed, wards, drinking water facilities are not provided. I have given some fact to supporting my statement. During pregnancy, mother-in-law to his son-in-law not providing more foods, fruits. She think providing sufficient food create complications in normal delivery. Mother eats more food and more due to this mother weight and baby weight increases so much, not taken in vitamins tablet. Mother is weak then at the time of delivery, it created more complications. That's all, ma'am. Okay, next. मुझे लगता है कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, आप लोगों, आप कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करो। कॉन्ट्रडिक्ट तो आप जब करोगे जब कोई अलग सा बोलेगा, लाइक सब एक ही पॉइंट पे अटक गए हैं, तो शायद मैं डिवाइड कर देती हूँ कि कौन किस पे बोलेगा। Excuse me, ma'am. I contradict with them. Ma'am, government have launched many schemes for the women, but due to not the good knowledge about that, we get not getting the good facility, because government for the rural development have launched the ASA and some small blocks and in villages, and some ambulance at the time of the delivery, but the rural areas have the mentality that we can born a new baby on house easily, but when the condition get more complicated, we run away from to the hospital, and that time the condition have lost in the hand of the doctor. Ma'am, I would like to contradict this statement. Ma'am, he has brought up a point that child can be that the labor part can be done at home. But ma'am, we are living in 21st century, and I don't think that
the so-called daimas who were used to be as good the in the in the past years are not as good now. I think that in 21st century doctors are a better option. And as he said that government has brought up many schemes as ASHA, but ma'am, we can't blame services because of service providers. And I know that there are many services, but that services have not reached to us. Government is spending money on advertisement instead of bringing up the good services. And government is the service provider, and I blame government for this, not their services. So I don't think that their services have been brought up as good as they wanted it to. So that's my statement. Okay. Excuse me, gentlemen. This is our responsibility. If government is not reach, government facility is not reach at the particular time. So this is the first our responsibility to take. This is the flow in. This is the flow in government's services. Na, this is the flow in government. I am not blaming the services. I am blaming the service provider, the government. Yeah, you are right, but it is lack of some knowledge. People are not aware of the facility. That's what I'm saying. Government should educate people. Government should educate people by bringing a good educational infrastructure. But government has failed in educational infrastructure, education system. If government can't provide good education, how can they educate people so that people can learn? Do you even know that many people are illiterate? If they can't even read and write, then how can you suppose that they would read the ad, they would watch TV, and they would see all this? People are not getting electricity. People are not getting water. Then how can they think of all these services? Yeah, gentlemen, but some illiterate people when go to the hospital, their doctors not treat them well. But gentlemen, I am not agree with you. This is the process of many people months, are poor, and this treatment have started many months people ago. Are poor. People are poor. People can't afford expensive private hospitals, so they will go to government hospitals. Okay, but the government hospital is not providing a good service. Then how can you expect such from government? If they can't provide a good service, then what's the point of providing the service if it can't be good? That's my point. मैम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक्चुअली थोड़ा घर पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया, तभी मुझे जाना पड़ा. बोलो, स्टार्ट करो. भारतीय युवा. भारतीय युवा माइक ऑन करो, बोलना स्टार्ट करो. ये नहीं बोलेगा आज. नमस्ते मैम. हाँ नमस्ते. Ma'am, I won't contradict anyone here, but I would like to speak on my topic, which is about the child marriage. It's proper topic. Would like to introduce the topic first. So, ma'am, the topic starts from here. The child marriage usually refers to a social phenomena practiced in some societies in India, and where a young child, usually a girl below the age of 15, is married to an adult man. As I can found, the practice of a child marriage is that in which the parent of the two children arrange a future marriage, and in this practice, the individuals do not meet one another until they reach the marriageable age. And when the wedding ceremony is performed, as per the law, the marriageable age is 21 for males, and for females is 18. My bad. So the gender inequality and the social norms and the perceived low status of girls, poverty, and the lack of the education is about the girl children, and control over sexuality are considered to be reason for prevalence of the child marriage.
So, ma'am, however, if any partner engages in marriage at a younger age, he or she can ask for the marriage to be declared void or unannulled. So, ma'am, facts and the figures about child marriage in India are given here, as I would like to mention here. So these are like the child marriage prevalence is generally defined as the percentage of women around the age of 20 to 24, and in India, the estimated age to have over 24 million child brides, and the 40% of the like world's, it is considered like normally it is considered these could be like false data, or I'm just mentioning here these data. So these are all about. So the marriage system and the practices vary by reason to reason. So that's all about. Now there could also be the like side effects of the child marriage, like girls who get married at an early age are often more like susceptible to be to the health risks and associated with early sexual initiations and child bearing. You go with early child marriage, Bharti Yuva. Yes, ma'am. Okay. Shall I continue? Yeah. But so in Rajasthan, child marriage is legal and their government supports this. Although, brother, as you are mentioning here, like child marriage in Rajasthan is allowed, but the government has like brought an initiative and also has passed a bill to restrict the child marriage that has said like the 21 years of the age is allowed for the marriage for the women. Like I would like to add a point here. I would like to add a point here that child marriage is not a reason, but child marriage is a consequence of this child mortality rate. Because parents think that girl child is a burden on them, and they think that if they marry off her at an early age, so it would be good, and they will not have to utilize their. भारतीय युवा वो यूट्यूब बंद करो अपना। और भारतीय युवा, नो ब्रदर, कोई यहाँ पे भाई नहीं है। ए माइक यूट्यूब बंद कर पहले, तो सबसे पहले। Ma'am, shall I continue my flow like I lost it somewhere? नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें खो जाओगे या तुम्हें कंटिन्यू करना है। यदि कोई इंसान आपसे कॉन्ट्रडिक्ट करेगा तो आपको उसकी बातों पे जवाब देना है ना, उसे भागना नहीं है उस जवाब से। भारतीय यूट्यूब बंद कर ले। मैम बंद कर लिया मैंने। मेरी आवाज रिपीट आ रही थी। नहीं बंद कर रखा मैम मैंने। चलो ठीक है। आवाज रिपीट हो रही है मैम। करो। कौन करेगा स्टार्ट? भारतीय युवा करेगा, कोई करेगा? What to do, ma'am? नेक्स्ट था टॉपिक था हमारा लेक्चरेट का यूनियन बजट। यूनियन बजट तो मैम लेक्चरेट था ना, और क्या था? रोशन फोन में बिल्कुल घुसेगा क्या है? रोशन कुमार कर क्या रहा है ये लड़का? कोई देख लो, रोशन कोई देख लो। मैं रिजॉइन करता हूँ। हाँ रिजॉइन करता हूँ। हाँ करो। भारतीय युवा तुम भी रिजॉइन करो, क्योंकि तुम्हारी आवाज मेरी रिपीट आ रही है आवाज। ओके मैम। अच्छा, एक लेक्चर का टॉपिक दिया था मैंने, यूनियन बजट 2022 एंड 2023। या मैम। सो कौन स्टार्ट करेगा उसको? कृष्णा मोहन सिंह, क्या तुम स्टार्ट करोगे? स्टार्ट करूं क्या मैम? करो स्टार्ट। ओके मैम। Good evening, ma'am, and my dear
Budget is not a word. Budget is a word which is not written in our constitution. Sorry, next. It is written as annual financial statement. I have divided it in three parts, like history, current budget, and conclusion. Budget is a word originated from Francis language. Word bucket. Budget come in black suitcase and in written form from 1950. But Pranab Mukherjee changed suitcase color in red till 1955. Budget print in English only. Since 1955, budget start printing in English and Hindi both languages. Till 2016, budget represented in last of February, and from 2017, budget represented in 1st February. Rail budget was separate initially, but and it introduced by Rail Minister. But from 2017, both presenting together as general budget. Initially, budget presented in evening 5 p.m. But from 1999, it presented in morning 11 a.m. First female represented budget was Indira Gandhi, but it was not only a finance minister. It also was a prime minister of India, and individually, lady who represented that budget is Nirmala Sitharaman in 2020. It was some basics of budget, and now I am coming on current budget section. ओए लड़के, तुझे कोई पुराना नहीं बताना है कि पुराना किसकी जिंदगी में क्या हुआ, तुम्हें आज के बारे में बात करना है। बस थीम इतनी सी दो, छोटी सी थीम देने की जरूरत है, बस ज्यादा इतना बताने की जरूरत नहीं। 2015 में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ। ऑन 1 फरवरी 2022 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेजेंटेड यूनियन बजट 2022-2023 पार्लियामेंट। उसने क्या किस किस पे दिया, एजुकेशन पे दिया, उसने किस किस पे आपका बजट पास किया है वो आपको बताना है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या रही है उसमें, एग्रीकल्चर के लिए क्या रहा है, ये सब आप लोगों को पता है। इकोनॉमी पे क्या असर होगा उस चीज का एट दैट कंक्लूजन, ठीक है। ये सब बताना था आपको, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है 2015 में क्या हुआ, किसके साथ कौन किसको लेके चला गया, कौन किसके साथ वापस आ गया, नो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कौन स्टार्ट करेगा? कुणाल, आज क्लास में काफी लेट आए हो। बिल्कुल श्योर। Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Myself Sachin Kumar, and today I will express my view on lecture topic budget 2022-23. The budget is the financial report of government in which the government have expressed their views, their expenditure on the current year, in which they expend their money, and in which how the money come and how will they expend their money on the government schemes. In budget 2022 and 23, the government have launched their budget on 4 pillars: PM Gati Shakti and Samekit Vikas and production and कंटिन्यू करो। In this budget, the government have launched and expressed their views on the Azadi Ka Amrit Mahotsav on the occasion of 100th anniversary of the freedom of India. ओके, सॉरी नहीं हो पाएगा, कोई नहीं, नेक्स्ट कोशिश करिए। गुड, नेक्स्ट। बोलो 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 बोलो।
The Constitution refers to the budget as the annual financial statement. The term budget is not used in the Constitution. The annual financial budget statement has been detailed in the Article 112 of the Constitution. The total expenditure in 2022 to 23 is estimated at rupees 39.445 lakh crore. While the total recipient other than borrowing are estimately at rupees 22.84 lakh crore. Goal of Amit Mahasab, a focus on growth and all-inclusive welfare. Second, promoting technology-enabled development, energy transmission, and climate actions. Third, virtuous cycling starting from private investment crowded in by public capital investment. Fourth, priorities of budget. PM Gati Shakti, inclusive development, productivity exchange of investments, sunrise opportunities, energy transition, and climate action, financial of investment. PM Gati Shakti, driven by seven engines, road, railways, airports, ports, mass transport, waterway, and logistic infrastructures. For Malaysian of master plan for expressway completing 25,000 kilometer national highway in 2022 to 23. Integration of postal and railway network facilitating parcel movement, one station, one product, capability building for infrastructure projects, agriculture and food processing, promoting a chemical-free natural farming, starting with farmers, lands close to the river Ganga, promoting post-harvest value, additional consumption and branding of millet products, use of Kisan drones to assist farmers, delivery of digital and high-tech service to farmers in PPP mode, launching fund with blending capital to finance agriculture startup education. One plus one TV channel to be expanded to 2,000 TV channels. High quality content will be delivered through digital teachers. Health. A national digital health ecosystem will be rolled out. Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham, and Anganwadi and Poshan 2.0 to be launched. I think the main announcement in the annual financial statement is that Finance Minister Nirmala Sitharaman said that the government will introduce a digital rupees in the financial year 22-23 and also impose a tax on 13% on cryptocurrency. That's all. Okay, very good. Hanji. Thank you. I would like to go ahead. So, our finance minister presented the union budget of 2022 to 2023 on the 1st February. The new union budget is worth 39.45 lakh crore. So this is the year when we are going to begin a new journey, because the past 2 to 3 years were tough for not only India but all world. So this is a time to boost our economy. The budget focuses on infrastructure, including the expansion of national highways and generation of new trains. The idea is to help job creation and boost economic activity. And also there is a main point on blockchain. Blockchain was the main highlight of the union. So one more point. One minute. So the ECLGS extended until March 2023 to help create 60 lakh jobs in 5 years. The digital ecosystem for livelihood and skilling to be launched to help skill, reskill and upskill. On infrastructure and manufacturing, the digital infra to get boost from Desh Stack e-portal launch. There are many contracts for national highways, and the main point is 100 PM Gati Shakti terminals
are going to be set up in next 3 years. And there is a plan under this PM of master plan for expansion of national expressways. So next is union budget on digital currency. As I said, blockchain was the main highlight of this. Blockchain based digital rupee to be launched by RBI, which is a great point in my views. But 30% tax levied on income from virtual digital assets, which is a major setback for many who have all these cryptos like Bitcoin and Ethereum. And also there's also the last point which I would like to add is housing and urban planning. The 80 lakh houses to be completed for beneficiaries under PM Awas Yojana, and 48,000 crore is set aside for this PM Awas Yojana. Till now, 60,000 crore were used to provide tap water to 3.8 crore households. So this was all under the union. There was many points under it which I might have missed. ओके गुड, लेकिन 3 मिनट से ज़्यादा बोला है आपने, इस बात का ध्यान रखो टाइम लिमिट का, ठीक है। और थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि एनर्जेटिक नहीं हो गुरविंदर, जब आप बोलते हो थोड़ा सा एनर्जेटिक होकर बोलो तो आपकी और चीज़ें ना अच्छी दिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। ऐसे सुस्त सुस्त होके मत बोलो, जैसे मेरी आवाज़ लगती है ना एनर्जेटिक, बिल्कुल कितना भी पढ़वा लो एनर्जेटिक आवाज़ लगेगी, तो वैसी ही एनर्जेटिक आवाज़ में बोलना है आपको, ठीक है। क्लियर है, वर्क करना है इस चीज़ पे। सो नेक्स्ट कुणाल। यस मैम। बोलो यूनियन बजट 2022 एंड 23। टाइम स्टार्ट कर दूंगी, जब आपको बोलना होगा बताना। यस मैम, आई एम स्टार्टिंग। ओके स्टार्ट। Good evening, ma'am, and my dear friends. I have chosen a topic to speak on the union budget. I'll be cover this topic into the 3 parts, namely introduction, recent developments, and the conclusion. According to the article number 112 of Indian Constitution and 101 of the Constitution Amendment Act of Indian Constitution, the budget is preferred as annual financial statement, and this statement is include an estimate receipt and expenditure which is begin from 1st April of the current year and ends on 31st March of the following year. Overall budget contain estimates of the revenue and estimates of the expenditures, and it was expenditure and budget is under the Ministry of the under the Department of the Economic Affairs, which is under the Ministry of the Finance, which is a nodal department of the preparing of the budget statement. And the first budget of the independent India was represented in 1947. Now, recently, Finance Minister Nirmala Sitharaman has been announced the budget on the 1st February, which is worth of the 39.45 lakh crore rupees. We will see what are the key highlights of the economic budget. What is the key highlight of the budget 2022? The government was a total spending on to enhance the job creation and to boost the economic activity. The government spending, which is 4.6%, more than the previous year, and also spent 1 lakh crore to the state has been announced. The total expenditure of the government is 39.45 lakh rupees, and which is total received rather than borrowing is 22.84 lakh crore rupees. The government was totally focused on the enhance the job creation and to create and to enhance the economic activity. Now we will see what is the allocation of the prices to the department. In the talking about infrastructure development, there is a one PM Gati Shakti Master National Plan which encompasses the 7 engine. In the 7 engine, which is include road, port, railways, mass production, mass transportation, and the so on. And government also announced to be the complete 25,000 kilometer highway in this current year. Talking about education, the government spent the government also created the government has been spent the digital university, which is so that student will be benefited the education throughout the world-class education. And the budget allocation to the agriculture and the farmers welfare was 1,36,513 crore.
and also introduce the Kisan drones, so for the crop assessment and digitization of the land. And the budget allocation to the health sector was 86,200.5 crore, which is more than the previous year. डन बताओ कि जब आपको बोला जाए ना कुणाल के आधा सेकंड बचा है, तो अपना वो उस लाइन को कंप्लीट करने के बाद ना कंक्लूड कर दो अपना टॉपिक. आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय टॉपिक, है ना, क्योंकि आपको 3 मिनट के अंदर अंदर ही कंप्लीट करना ही है ये कैसे भी. ठीक है, टॉपिक को आपको 4 टॉपिक मिलते हैं, 4 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक सिलेक्ट करना होता है. उसके लिए आपको 3 मिनट मिलते हैं कि आपको बॉडी में क्या क्या रखना है, इंट्रोडक्शन, उससे क्या क्या हुआ है और क्या होगा, और कंक्लूड. बस आपको ये 3 मिनट के अंदर कंप्लीट करने हैं. ठीक है, अभी आपका रह रहा था, काफी बड़ा था ये वैसे, है ना, काफी बड़ा था, रह रहा था. अच्छा, अभी मैं सुनूंगी यूनियन बजट भी, लेकिन कल का लेक्चरेट टॉपिक आप मेरे से पूछ लो. देन उसके बाद ओमिक्रॉन कैसा लगा, ओमिक्रॉन एंड कोविड-19, ये 2 टॉपिक हैं, कोविड-19 एंड ओमिक्रॉन. ठीक है मैम, दोनों अलग अलग. ये मेरे ऊपर डिपेंड होगा कि मैं दोनों में से किससे क्या पूछूंगी. ओके मैम, दोनों रेडी कर लेंगे. ठीक है, रोहित स्टार्ट. 1 मिनट रुक जाना बस, मैं टाइमर लगा लेती हूँ. 3 मिनट है. वेट मैम, माय अपॉलॉजीज मैम, मैं नहीं कर पाया. व्हाई मैम? कल ग्रुप डिस्कशन भी होगा. schedule because I visited Delhi within 24 hours go and came back about 2000 kilometers. So what? Got the time. कोई जरूरत नहीं है मेरे को एक्सक्यूजेस देने की. यदि तुम होते तो तुम ट्रेन से भी पढ़ सकते थे, कहीं भी बैठ के अपनी लाइनें पढ़ सकते थे यूनियन बजट की. I was driving, ma'am. You driving? There was a medical emergency in my family just because I had to go there. That's why I can't. अच्छा, ये एक्सक्यूज बहुत अच्छा है वैसे. चलो कोई नहीं मैम, आज एक्स्ट्रा ग्रुप डिस्कशन में होगा. ये कल ग्रुप डिस्कशन होगा, लेकिन ग्रुप डिस्कशन जो होगा, आज ग्रुप डिस्कशन हुआ था 6 बजे, लेकिन कम बच्चे आए थे तो हुआ था 15 से 20 मिनट. तो कल टाइम पे आना 6 बजे. मैम, टाइम शिफ्टिंग का नहीं होगा क्या? टॉपिक क्या होगा मैम ग्रुप डिस्कशन का? टॉपिक नहीं बताऊंगी, कल ही बताऊंगी टॉपिक. मैम, ग्रुप डिस्कशन 6:30 के बाद बेहतर रहेगा. मतलब कल 6:30 के बाद एक तो ग्रुप डिस्कशन होगा, उससे पहले लेक्चरेट होगा तुम्हारा, तो लेक्चरेट प्रिपेयर करके आना. भारतीय युवा बोलना पसंद करोगे यूनियन बजट पर? या गाइस देखो, जो आपकी पीएम शक्ति है उसमें आपको ना प्रॉपर डिटेल देने की जरूरत नहीं है. आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसका पूरा डिटेल दोगे. ये जो पीएम जो उन्होंने डिजाइन किया है अपना, वो प्रॉपर आपको नहीं देना है. प्रॉपर दोगे तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा आपको उन चीजों में. अंडर पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान द नेशनल हाईवे नेटवर्क विल बी एक्सपेंडेड 2500 किलोमीटर रोड. The government is planning set up multimodal logistic park at 4 locations. These steps can boost economic activity. थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे फोकस करके अपनी जो चीज़ें हैं उनको बनाओ. ठीक है, लाइक एजुकेशन में उन्होंने क्या किया है, सीतारमन ने. भैया किसी का फोन आ रहा है, किसका फोन आ रहा है? 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, मैं तुम्हें एक पॉइंट बताती हूँ. जो आ रहे हैं घर पर, उन्हें कुछ काम होगा, उन्हें कुछ पढ़ना होगा, तो वो आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो आ जाओ घर पे. अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं, लाइक उनका एफकेट 3-4 बार निकल गया लेकिन एसएसबी नहीं निकला. ठीक है, तो लेकिन एसएसबी के लिए वो मेहनत कर रहे हैं. तो आज पता नहीं कैसे किसी का शायद बर्थडे है, तो वो मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो वो आ रहे हैं. तो मैंने कहा आ जाओ भाई. अब उनके लिए क्या बनाना है वो और सोचना पड़ेगा तुम्हारी मैडम को. चलो वो सोचते हैं.
जोमेटो से नहीं मंगवाऊंगी, खुद ही बनाऊंगी, वो खुद ही ये और कहेंगे कि जोमेटो से मंगवा दिया। बेइज्जती करवाओगे तुम मेरी। चलो आप इस पे यूनियन बजट पे क्या बोल सकते हैं? ड्यूरिंग द पेंडेमिक, या आप ये कह सकते हैं वी डिस्कवर द रेविलेंस ऑफ इंटरनेट स्कूलिंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक। आपको पता है, ये आवाज किस बंद करो जिसकी भी आवाज गूंज रही है। ए भारतीय युवा, आज तू माइक ऑन मत कर, ठीक है? वी डिस्कवर द हाँ We discovered the relevance of internet schooling during the pandemic in partnership with institution this budget. जैसे आपको भी पता है कि अभी बहुत ज़्यादा हमारे देश में क्या हो गया था, एक पैंडेमिक आ गया था जिसकी वजह से सबने अपना क्या कर लिया था, ऑनलाइन एजुकेशन ओपन कर दिया था। तुम अभी पढ़ रहे हो, किस में पढ़ रहे हो? ऑनलाइन एजुकेशन में। द बजट प्रपोज द सिटिंग अप ऑफ डिजिटल यूनिवर्सिटी नेम डैश टेक। किसी ने भी इसका नाम नहीं लिया डैश टेक पोर्टल का। वाई in collaboration with university। फिर स्टार्ट कर दिया। This is a very good step considering the negative impact of the pandemic on offline education। किसी ने भी इसका नाम नहीं लिया डैश टेक का। ये बहुत अच्छा था आप लोगों के लिए, आप इसको रख सकते थे अपने उसमें। आपने टीवी का बता दिया था कि 2022 में पोस्टपोन सेटिंग अप 200 टीवी चैनल्स। ये किसी ने बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा किसी ने बताया था इसके बारे में, ठीक है? एक स्कीम आई है, ए स्कूल आर रीओपनिंग बजट 2022 इंक्रीज बजट फॉर द समग्र शिक्षा स्कीम बाय 20% टू हेल्प स्कूल। ये स्कीम आई है, ये स्कीम भी किसी ने नहीं बताई। तो कुछ जो चीजें आती है ना, लाइक पीएम आवास योजना किसी ने बताई थी, मुझे याद भी नहीं है। पीएम आवास योजना नहीं बताई। बेटा स्कीम तो बतानी जरूरी है, स्कीम नहीं बताओगे कैसे चलेगा? आप यूनियन बजट के ऊपर बोल रहे हो, स्कीम तो बताओ कौन कौन सी स्कीम निकाली गई है। कंक्लूड तक पहुंचो, टाइम से पहले पूछो। मैम शैल स्पीक ऑन द टॉपिक। नहीं भारतीय युवा, आज तुम नहीं बोलो क्योंकि मेरी आवाज रिपीट आ रही है तुम्हारे पास। तुम जब भी अपना माइक ऑन कर रहे हो मेरी आवाज रिपीट आ रही है उसमें, तो आज तो आपको गूंगे बने रहना पड़ेगा। और कल के जो 2 टॉपिक है, ओमिक्रॉन एंड कोविड-19, उसको प्रिपेयर करके आना। और 6:30 बजे, 6 से 6:30 बजे आपका लेक्चरेट का होगा और एक बच्चा प्रिपेयर करेगा, चाहे वो व्रती का हो, चाहे वो आपका चौहान साहब क्यों ना। मैंने अर्ली मैरिज वाला कंप्लीट किया था, बट इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम में मुझे इधर उधर जाना पड़ गया, इसलिए नहीं बोल पाई। वेरी गुड। अब लेक्चरेट के ऊपर भी बोलना है कल से, ठीक है? लेक्चरेट के लिए बोलना है। राधा भी बोलेगी, सब बोलेंगे, कोई भी बच्चा, सुनीता भी बोलेगी इवन। तो कल पहले 6 से 6:30 बजे तक आपका लेक्चरेट होगा, देन आफ्टर दैट 6:30 बजे से लेकर आपका ग्रुप डिस्कशन चलेगा 15 से 20 मिनट। एक टॉपिक दिया जाएगा। टॉपिक बता दीजिए, थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेंगे। अरे कल ना ये नहीं है ग्रुप डिस्कशन, मैं भूल गई। स्टार्टिंग में लेक्चरेट होगा और 6:30 से 7 बजे तक आपका इंटरव्यू राउंड है। सॉरी, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो चीजें मुझे कल बतानी है आपको, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में, ठीक है? क्लियर है? चलो बच्चों, आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं और मुलाकात करेंगे अब आपसे कल के सेशन में। तो अपना ध्यान रखिए, 6 बजे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद बच्चों। नाइट मैम। ओके मैम, गुड नाइट। मैम कुछ पूछना है मैम।